Standard 5th, Subject English, Lesson number 27, The Legend of Marathon. Dear students, before I start this lesson, I would like to give you a short introduction regarding this story. The Legend of Marathon is an inspiring story of a young man of 22-year-old whose name was Phidippides. There was a battle between the Persian and Athenians, but the reformers refused to accept the defeat. There was that the entire enemy Athens was far away from their cities, with only Egypt people, women and children back home at Athens. The Persian made a plan to take the sea route and reached and captured the Athens before Athenians returned to the city to celebrate. So, student, this was the short introduction related to this lesson. Now you can say that summary of sub-paragraph of the lesson. The marathon is a sporting event. It is a running race of about 42 kilometers. The word marathon also means a task or event that lasts a long time and requires a lot of efforts and patience. विच मीन्स जो मैराथन है वो क्या है, एक स्पोर्टिंग इवेंट है जिसको करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हार्डवर्क की ज़रूरत होती है और पेशेंस का मतलब क्या होता है, सब्र करना पड़ता है. द फर्स्ट मैराथन रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड at the time of the first Olympic Games, which were held in Greece. Greece is a city. Okay. The marathon was started in the memory of a legendary Greek hero. मैराथन क्यों स्टार्ट हुआ? ग्रीक में जो एक ने स्टार्ट किया था जिसका नाम मैंने आपको स्टोरी में बताया है, फिडिपिटीज, who had carried an important message from the Battle of Marathon to Athens. Given below is a story of his famous run from Marathon to Athens. We do not know whether the story is historically accurate, but it has inspired many generations of sportsmen. इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो अभी हम स्टोरी रीड करेंगे वो हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट है ये हम नहीं कह सकते, बट ये स्टोरी रीड करने के बाद हम इससे इंस्पायर ज़रूर हो जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो हमको क्या करता है, इंस्पायर करता है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड इट. About 2500 years ago, Persia was a mighty kingdom. Now students, what is mean by mighty? Mighty means a very strong and powerful kingdom. Their large army had landed in the bay near the town of Marathon. Their target was Athens, a city-state in Greece. Where Athens was situated? In which state, dear students? In states Greece. Greece is a state. Okay. Athens had a small army compared to the Persian one, but the Athenian soldiers were very brave. विच मीन्स जो पर्जिया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल, उसकी आर्मी भी क्या थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी एज कम्पेयर टू अथेनियंस. बट जो अथेनियंस के सोल्जर्स थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे. दे हैड फेस द पर्जियंस बिफोर, और उन्होंने पहले भी पर्जियन से क्या किया था, बैटल की थी, उनसे लड़े थे. बट दे नीडेड हेल्प फ्रॉम अदर ग्रीक kingdoms. Now they decided to send a special messenger to the neighboring kingdom of Sparta. His name was Phidippides. बट ये टाइम पे एथेनियंस को नेबरिंग कंट्री से क्या चाहिए थी, मदद चाहिए थी, तो इसलिए उन्होंने किसको भेजा, फिडिपिडीज. Phidippides was a young man who served as a day-long runner. He ran to Sparta like the wind. और जो फिडिपिडीज क्या था, वो एक नौजवान था और उसने
एक दिन में बहुत ज़्यादा लंबा क्या किया था, रन को बनाया था। एंड वो स्पार्टा के लिए कैसा दौड़ा था, जैसे कोई एक हवा चलती है ऐसे टाइप में। He covered the distance of nearly 100 kilometers in a day. But alas, the people of Sparta were busy with some ceremonies. They did not want to join the battle immediately. Phidippides took this message back to Athens with a heavy heart but on light feet. Again, he ran 100 kilometers within a day. Students, can you tell me why did the Spartans not cooperate with the Athenians? Yes, because the people of Sparta were busy with some ceremonies, hence they did not cooperate with the Athenians. That's why Phidippides went back. When the generals of Athens heard the cold Spartans' response, they did not lose heart. Which means, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जो एथेंस का जो जनरल था उसने जब सुना कि उन्होंने इमीडिएटली वॉर करने, साथ देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी. दे वेर रेडी टू फाइट ऑन देयर ओन. और वो लोग मतलब अपने आप से ही रेडी थे कि हम लोग मतलब अगर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम होप छोड़ देंगे. द पर्शियन आर्मी वॉज वॉचिंग एथेंस लाइक अ कैट वॉचेज अ माउस हॉल. इसका मतलब क्या हुआ, जो एथेंस आर्मी थी वो उनको देख रही थी कब मतलब एथेंस के लोग जो है हम पर अटैक करेंगे और हम उन पर क्या कर देंगे, उनको हरा देंगे. बट they decided to launch a surprise attack on the Persian. Who had decided? Athens people were decided they will attack on a surprise. वो क्या करेंगे, surprise attack करेंगे. Okay. So the Athenians generals sent their flanks. Dear students, flanks means army. Okay. Flanks round the Persian forces like speeding arrows and began to draw them in. The Persian were not ready for the battle. वो लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे एथेंस लोगों का कि वो लोग जैसे कोई कैसा बिल्ली एक चूहे के माउस होल में इंतजार करती कि जैसे चूहा बाहर आएगा तो मैं क्या करूंगा, उस पर अटैक करूंगा. बट एथेंस का जो जनरल था उसने क्या किया कि हम क्या करेंगे, सरप्राइज अटैक करेंगे. और वो सरप्राइज अटैक के लिए जो पर्शियन आर्मी थी वो रेडी नहीं थी. ओके. So students, today we have completed our first part. We will stop here only. So I request to all of you, please read the story once again and understand it. Now students, can you tell me what does marathon stand for today? Yes, very good. Today, marathon means a sporting event. It also means a task or event that lasts a long time and required a lots of efforts and patience. Yes. Now, in whose memory was the marathon started? It is very easy. Yes, the marathon was started in the memory of a legendary Greek hero, and his name was Phidippides. So students, I hope you have understood the first part of this lesson. Next part we will continue in the next video. Take care. Bye bye.